ठीक है। सो अब देखो कंटिंजेंसीज का जो अपना पार्ट है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें आता है बेसिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंटिंजेंसीज का बेसिक्स। तो इसमें हम लोग बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस को करेंगे। इसका जो पहला और दूसरा जो बुकलेट है ना वही है सार, और जो लास्ट वाला जो प्रॉफिट टेस्टिंग वाला जो बुकलेट है, मैंने प्रॉफिट टेस्टिंग से कुछ आए नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इसका आप लोग देख लीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें आपका जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो मैं अब जैसे एक बार आप जब कर लेते हैं तो बेसिक में मैं आपको डिफिकल्ट वाला ही दूंगा, बेसिक बेसिक एकदम नहीं दूंगा। सो जैसे व्हाट यू कैन डू इज April 14 क्वेश्चन नंबर 3, then you can do April 14 question number 9, then you can do April 14 question number 6, September 14 question number 3, then you can do September 14 question number 7, then you can do September 14 question number 12, then you can do April 15 question number 1, then you can do April 15 question number 7, then you can do September 15 question number 2, September 15 question number 5, September 15 question number 8, then you can do September 16 question number 1, September 16 question number 6, September 17 question number 5, September 17 question number 6, September 17 question number 9, April 18 question number 8, September 18 question number 3, September 18 question number 7, April 19 question number 1, define in words, April 19 question number 2, April 21 question number 5, April 21 question number 6, April 22 question number 4, September 22 question number 1, September 22 question number 5, April 23 question number 1, question number 3, April 24 question number 1. Why this much question in this? Because basics is extremely important. माने बेसिक में आप देखिए, आप एन्युटी, एश्योरेंस, यूडीडी, सीएफएम, ईपीवी, वेरिएंस सारा चीज सीखते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस, टर्म एश्योरेंस, प्योर एंडोमेंट, सारा एन्युटीज। बेसिक आप जितना अच्छा से करेंगे ना उतना फायदा है, और सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एक दिन में आपका पूरा बेसिक हो जाएगा। मेन आपको जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ना उसी में वो लोग घुमाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू वॉच आउट फॉर इज द फ्रैक्शन पार्ट, then there is select mortality part. You need to practice these things first. एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही चीजें करनी है और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर बेसिक्स।